अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपको पता है मैंने पास्ट में आपको बहुत सी रेसिपीज़ बताई है और उनमें से कुछ बेक थी, कुछ फ्राइड थी। और आपको पता है कि जैसे सारी बहुत मज़ेदार थी, मगर अब हमें कोई जैसे हम कोरोना वायरस में अंदर घर में बैठे हुए तो सबका थोड़ा थोड़ा वेट पुट ऑन हो रहा है। तो आज मैं आपको इसलिए एक कीटो डाइट का खाना बनाना सिखाऊंगी। और जैसे आपको पता है कीटो डाइट वर्ल्ड फेमस आजकल चल रही है। तो ये डाइट बहुत आपको फुल करती है, मगर आपको जैसे फ्रेश फील करते हैं और आपको वेट ज़्यादा नहीं पुट ऑन होता। तो इस रेसिपी को हम शुरू करते हैं। So, hey guys, what's up and welcome back to your video. Today, I'm going to be telling you a recipe from a keto diet. As you may have known, in the past, I've told you many recipes ranging from baked to fried. But as you know, coronavirus is going on and we all are stuck at home. So, we all are putting on some weight. I decided that why not I try and give you guys healthy recipes. And so today I'm going to be telling you guys the recipe of a keto diet meal. So let's get right over into here it. I have all my ingredients. इधर मेरे पास अपने सारे ingredients है और इस recipe के लिए हमें चाहिए for this amazing recipe we're gonna be needing half kg of minced beef, आधा kg beef keema, half kg of Parmesan cheese which I've shredded, आधा kg Parmesan cheese जो shredded है, half kg of spinach which is boiled and finely chopped, आधा kg पालक जो boiled है और finely chopped, और 3 टमाटर जिसको अंदर से जैसे हॉलो किया हुआ है, अंदर से कुछ नहीं है और ऊपर से काटा हुआ है, साइड में रखा हुआ है. 3 tomatoes which are chopped, which are hollow from the inside and the tops have been cut off and kept on the side. और इधर मेरे पास है 1 cup cream, 1 cup of cream, 1 cup of chopped onions, 1 cup chopped onion, so that's approximately 1 large onion, so वो है तकरीबन 1 बड़ा onion. फिर spices के लिए है मेरे पास आधा teaspoon black pepper. For the spices I have half teaspoon of black pepper, half teaspoon of red chili flakes, आधा teaspoon लाल कुटी मिर्च, half teaspoon of salt, आधा teaspoon नमक, आधा teaspoon paprika, half teaspoon of paprika. मैं यूज़ करी paprika क्योंकि इसका अच्छा color होता है और less spice. I'm using paprika because it has a good color and less spice, वरना आप red chili powder भी यूज़ कर सकते हो, or else you can also use red chili powder. 3 tablespoon लहसुन paste, 3 tablespoons of garlic paste, or 3 tablespoons olive oil, and 3 tablespoons of olive oil. I'm using olive oil because it's a healthier substitute. मैं यूज़ कर olive oil क्योंकि वो healthy है. इधर मेरे पास अपने सारे ingredients हैं, मगर अभी हम spinach और हम अपने पालक और cream को mix करेंगे. Over here have all my ingredients, but right now what we're gonna mix our spinach and our cream into my bowl here. तो हम अपने spinach को डाल रहे हैं. We're gonna put our spinach in it और फिर हमारी पालक, and now our cream. और अब हम इसको mix करेंगे. Now I'm gonna mix this until it's well combined, जब तक ये well combined हो जाए. ये तो oops. जैसे आप देख सकते हैं ये mix होने लगा, like you can see it's starting to mix together.
and we just want it to be well incorporated. और हमें बस इसको पूरा जैसे mix करना. We want it to be well incorporated. Okay, जब आप देख सकते हैं ये हो गया. Like you can see, this is done. अब हम अपने stove पे चलते हैं. Now we are at my stove. Over here I have my pan preheating, and what we're gonna do is we're gonna put our olive oil in. मेरा इधर pan preheating है और इसके अंदर मैं अपना olive oil डाल रही हूँ. और फिर मैं अपने onions डालूंगी, and then I'm gonna put my onions in it. और इनको जैसे saute करूँगी, and I'm just gonna like saute them. और फिर हम अपने garlic paste डालेंगे. Then we're gonna put our garlic paste into it, so लहसुन paste. And then हम इसको पूरा mix करेंगे, and I'm just gonna mix this whole thing up. अभी हमारा प्याज saute हो गया. As you can see, our onions are sauteed now, and now we're gonna add in our meat along with our spices. अब हम अपने इसमें meat डालेंगे spices के साथ. Our beef अंदर डाल गया. Now our beef is in, और अब हम इसको mix करेंगे. I'm just gonna mix this. और इसमें हम अपने spices डालेंगे. I'm gonna put all my spices into it. So our paprika, हमारा paprika, black pepper, kali mirch, namak, or salt, the red chili flakes, my red chili flakes, और हम बस इसका पूरा mix करें. And I'm just gonna mix everything together. अब ये हमारा mix हो गया. As you can see, this is mixed. और अब हम इसमें अपना spinach or cream डालेंगे. I'm going to take my spinach and cream and put it into it. और हम इसको mix करेंगे. I'm just going to mix this and then cook it for an additional few minutes and then bring to my counter. मैं इसको mix करके cook करेंगी few minutes के लिए, फिर अपने counter पे आ जाऊंगी. हमारा हो गया. Now this is done, और मैं अपने काउंटर पे आ गया, and I've come to my counter. ये मील दो तरीकों में खा जाता है. This meal can be in two ways. One in a salad wrap में, और in tomatoes में stuff करके steamed या baked, and stuffed in those tomatoes with and then steamed or baked. पहले मैं आपको salad wrap में बता रही हूँ कैसे खाते हैं. मेरे पास इधर अब एक टेबल स्पून का चम्मच है, और मैं अपने इसको जैसे scoops में करके डाल रही हूँ. I have a tablespoon over here, and I'm scooping up our filling and putting it in my salad wrap. So number 3, ये हमारा तीसरा. और अगर आपको चीज़ नहीं पसंद तो फिर आप इसको ऐसे खा सकते हो. And if you don't like cheese, you can have this directly. मगर अगर आपको चीज़ पसंद है, आप इस पे चीज़ डाल सकते हो. And if you like cheese, you can sprinkle cheese on top of this. And if you really like cheese, तो फिर आप इसके ऊपर और डाल सकते हैं. And if you अगर आपको बहुत चीज़ पसंद है, तो फिर आप इसके ऊपर और चीज़ डाल सकते हो. ऐसे. फिर ये आपका चीज़ तैयार हो गया. Now our salad wrap is ready. अब हम अपना tomato को stuff करेंगे. Now we're gonna stuff our tomatoes. हमें इसके लिए hollow चाहिए अंदर. We want to be empty from the inside. We want to remove the seeds. हम अपना एक scoop लेंगे इस filling का. I'm going to take 1 scoop of my filling और इसके अंदर डालेंगे. I'm going to put it inside. और मैं इसको जैसे नीचे तक push करेंगे, and I'm just going to like push it to the bottom. और फिर इसके ऊपर एक और लेयर चीज़ की डालूंगी. फिर again मैं अपने मीट की डालूंगी, और फिर जब तक ये fill हो जाए. And then I'm just going to layer this with cheese and then the meat and the filling, and then just layer it till we reach the top. तो फिर हमारी cheese, and now our cheese. फिर इसको मैं नीचे push करेंगी. I'm just going to push it down.
और मैं फिर इसके ऊपर और filling डालेंगे. I'm just going to take one more scoop and put this on. और मैं अपने इसके tablespoon के back से नीचे जैसे push कर. I'm using the back of my tablespoon to just like push it in. और अब मैं इसके ऊपर एक last layer of cheese करा रही हूँ. I'm just gonna put the last layer of cheese on top of this. Okay, अब हमारा एक हो गया. अब मैं बाकी set करूँगी. Now that this one is done, I'm just going to do it with the rest and wrap it in aluminium foil and we'll see then. और फिर मैं इसको aluminium foil में wrap करके फिर हम चूल्हे पे मिलते हैं. अब ये हमारा foil में wrap हो गया. Now this is wrapped in aluminium foil. I've put it on my stove here. मैंने अपने stove पे डाल रही हूँ. और मैंने इसको toothpick से इसका top को close कर दिया. And I've just like put a toothpick so that the top like stays closed. And we're gonna turn the stove on. और अब मैं अपना stove on करूँगी. अभी off है. It's off right now, so don't worry. Right now it's on. अब ये on हो गया. और मैं इस पे अपना lid लगाऊंगी. I'm just gonna put my lid on it ताकि steam हो जाए so that there's steam. Once this is done, I'm going to turn the stove off and this is what it should look like. अब ये हो गया. मैंने stove off कर दिया और ऐसे देखते हैं. ये around 30 to 35 minutes लगा. This took around 30 to 35 minutes. और अब हम अपनी counter की तरफ चलते हैं. Now let's head to my counter. Your keto meal is done and it looks amazing. And this way you also have two options. Rather you have it in a stuffed tomato or you have it as a iceberg wrap, and both taste awesome and I'm sure you guys will too. So let's have a look at this. It's kind of hard right now. Whoa, look at that cheese, and you can see the spinach under there with the meat. It looks amazing. Okay, so if you guys like this recipe, tell me in the comments down below and give this video a big thumbs up. Please like, subscribe and share my videos. Bye. तो हमारा कीटो मील रेडी हो गया. अगर आपको इस रेसिपी को पसंद आए मुझे नीचे कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को लाइक करें और मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें. बाय.